I just thought कि I would do a prank on my fellow roommate Akansha and I told her कि तेरी flight लगने वाली है और मेरी flight लग गई थी, ठीक है? The moment I entered the flight, I got my periods. I am scared to anything. My hands are shivering and we are going to call all the seniors over there. I'm gonna tell you that you're not fit for the flight. हमारे साथ रैगिंग होती थी, हमारे साथ इतना बुरा किया जाता, हम तो पूरी फ्लाइट रो के भी काम कर लेते थे. Hi my Sanghu fam, welcome back to my channel. This is me, Sanghu Mitra. This is actually episode 6 of my Cabin Crew Untold Stories and I've been really, I don't know, like काफी time हो गया ये episode post किए हुए. I was really thinking कि और क्या story मेरे पास बची है बताने के लिए. But if I deep dive into मेरे पूरा cabin crew का experience 5 साल का, I have so many things to share with you guys. And आज it is one of the stories of my first flight and this is a very interesting story because आप thumbnail से समझ गए होंगे कि I got into a fight with my lead of the flight, the superior most of the flight and I'm really interested to tell you this story because मेरे बहुत close ones को ये story पता है कि हाँ मैंने वैसे पहली flight पे जाके कांड किया था and I know जो cabin crew aspirants होंगे या जो cabin crew की life में interested लोग होंगे उनको ऐसे जानना होता होगा ना कि हाँ पहले दिन flight पे क्या होता है when you go after training. So I have a very interesting story for you guys, so let's just start. तो सबसे पहले guys 3 महीने की हमारी cabin crew की ट्रेनिंग होती है, ठीक है? हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया. 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपकी फ्लाइट्स लगना स्टार्ट होती है. तो जो फर्स्ट फ्लाइट होती है इट इज फैम फ्लाइट. फैम फ्लाइट मींस दैट यू गो ऑन अ फ्लाइट, यू आर नॉट अ वर्किंग और ऑपरेटिंग क्रू, you just get familiarized with the safety operation of the flights, in-flight services. So all you have to go on the flight is do little bit of work, not like much, but all the main task is for you is to notice things. जब आप ट्रेनिंग से खत्म करके फर्स्ट फ्लाइट पे जाते हो, that is फैम फ्लाइट. तो गाइज हमारा भी ट्रेनिंग सब खत्म हो गया था. मैं चेन्नई बेस्ड थी, चेन्नई चली गई थी एंड वहाँ पे हम मजे कर रहे हैं 15 दिन 5 स्टार होटल में. मैं और मेरे 4 फ्रेंड्स फुल बीच पे जा रहे, कभी कुछ करे. दिस स्टोरी ऑफ वन नाइट. हम शाम में बीच पे गए थे, मस्ती की हमने पूरे दिन और हमारी फ्लाइट लगी नहीं रही थी. एवरीडे वी यूज्ड टू विश कि कब मौका मिलेगा कि हम ये यूनिफॉर्म पहनेंगे, फ्लाइट पे जाएंगे, पैसेंजर से इंटरैक्ट करेंगे, सर्विस करेंगे. मतलब दिस इज व्हाट वी वर ड्रीमिंग फॉर एंड हमारी फ्लाइट लगी नहीं रही थी. तो शाम में ऐसे हम लोग चले गए घूमने घामने, आए रात में 9-10 बजे. तो आई जस्ट थॉट कि आई वुड डू अ प्रैंक ऑन माई फेलो रूममेट Akansha. If you guys know the story already from her page, you know कि मैंने उस पे प्रैंक किया था and I told her कि तेरी फ्लाइट लगने वाली है और मेरी फ्लाइट लग गई थी, ठीक है? So whatever, cut short story कि actually I was doing a prank on her कि तेरी फ्लाइट लग गई है, जल्दी तैयार हो जा. and later on रात में जाके जब मेरी फ्लाइट लग गई तो it was 4 बजे मेरी फ्लाइट लगी थी and I was really exhausted that day क्योंकि हम लोग पहले बीच गए, फिर रेस्टोरेंट गए, फिर रात में कुछ I don't think so हम 1 बजे तक भी सोए थे. 1 बजे जाके मुझे पता चला कि सुबह 4 बजे मेरी फ्लाइट लग गई है and I was a new crew. I was not really aware about the standby timings, किस टाइम पे आपकी फ्लाइट लग सकती है and all that technical things. So I started getting ready and I was really nervous क्योंकि वो मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी and मैं सोच रही थी यार क्या होगा फ्लाइट पे, क्या करते हैं जाके, कैसे मैं अपने सीनियर से बात करूंगी. और जब आप इंटरनल डिस्कशन कर रहे होते हो ना अपने एम्प्लॉय से, तो बहुत लोग आपको बताते हैं कि इससे बच के रहना, ये जो सीनियर है, हमारे में उसको लीड कहते थे सीनियर को, इस लीड से बच के रहना, इसके साथ तो अच्छे से काम करना एंड सब आपके सीनियर्स आपको थोड़ा ज्ञान दे देते हैं. तो मेरी फ्लाइट लगी समथिंग भुवनेश्वर, चेन्नई भुवनेश्वर एंड ऑल दैट 4 सेक्टर्स से. सो वेरी लॉन्ग डे फॉर मी. आई वाज गोइंग एट 4, आई थिंक कमिंग बैक एट 4. ऐसा कुछ 10-12 आवर्स का स्ट्रेच वर्क था मेरा. तो मैं रेडी हुई, सुबह अच्छे से गई एंड द मोमेंट आई एंटर्ड द फ्लाइट आई गॉट माय पीरियड्स. आई वाज लाइक भाई आज ही होना था ये. एंड मतलब जब बाकी क्रू आए, आई टोल्ड देम दैट इज माय फर्स्ट फ्लाइट एंड आई डू नॉट नो लॉट ऑफ थिंग्स बट आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप एज अ टीचर मुझे चीजें सिखाओगे एंड आई एम कीन टू लर्न न्यू थिंग्स ऑन द फ्लाइट एंड व्हाटएवर. क्योंकि जो भी 3 महीने हम पढ़ के आए थे ट्रेनिंग में वो ऑफ कोर्स एक प्रैक्टिकल नॉलेज है. जब आप फ्लाइट पे जाते हो थिंग्स आर रियली डिफरेंट बिकॉज यू हैव टू एक्चुअली हैंडल पीपल एंड तब आपका वो जो आपने बुक्स में पढ़ा है वो नॉलेज काम नहीं आता. आपका एक्चुअल जो आपका स्पॉन्टेनियस एक्शन होता है, जो एक्सपीरियंस होता है ना, उसके हिसाब से आपका काम दिखता है. ऐसा कैबिन क्रू लाइफ में होता है. तो उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है मम्मी वहां खड़े होकर सुन रही है एंड अभी मैंने सबको बोल दिया घर में चुप रहना, मैं वीडियो बना रही हूँ. खैर गाइस, कमिंग बैक टू दिस स्टोरी, ये चीज हुई, ठीक है? अब फर्स्ट जो मेरी फ्लाइट थी उसमें मुझे लगा कि भाई मुझे सिंपली यही बोलेंगे कि तुम नोटिस करो, ठीक है? नोटिस करो सारी चीजें आसपास जो भी हो रहा है. तो मैं नोटिस कर रही थी हर चीज. एकदम से जो लीड थी, आई जस्ट फेल्ट दैट शी द सीनियर मोस्ट ऑफ द फ्लाइट, शी डिडंट विश टू टॉक टू मी और शी डिडंट लाइक मी. मतलब मुझसे ना उनसे थोड़ी ऐसे नेगेटिव सी वाइब आ रही थी या मे बी वो अपने पर्सनल किसी रीजन से फ्रस्ट्रेटेड होगी. सो शी कम्स टू मी कि जो फर्स्ट सेक्टर का जो सेफ्टी डेमो होता है, जो क्रू
क्रू कर दिए ना, 2 द्वार आगे 2 द्वार पीछे, वो आप करोगे. I got really scared because मैंने प्रैक्टिस करी है लेकिन मैंने पैसेंजर के सामने कभी सेफ्टी डेमो नहीं किया है. तो उसने मुझे पहला टास्क ये दे दिया, वो भी फर्स्ट फ्लाइट में. I am scared to anything. My hands are shivering. तब मैं कैसे करूंगी सेफ्टी डेमो? Everybody would be noticing क्योंकि अनाउंसमेंट पे आपने प्रैक्टिस करी होती है, but you're not perfect. Of course फर्स्ट फ्लाइट है, बहुत सारी चीजें अंदर चल रही है, नर्वस है, तो फिर भी मैंने कहा चलो भाई, she has asked me and I should do it. तो उसके बाद मैं गई and I started off with my safety instruction वाला सब कुछ स्टार्ट किया. एंड जैसे सीट बेल्ट उठाने की बारी आई ना, there was this passenger who was wearing लुंगी, ठीक है, on the first चार्ली वाली सीट पे लुंगी पहनो. तो मेरी सीट बेल्ट मतलब लुंगी के ना, मतलब क्या बोलूं मैं, नीचे गिर गई. इट वाज वेरी इनअप्रोप्रिएट कि अगर मैं झुक के वो उठाती, वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता. तो आई डिडंट नो हाउ टू स्टॉप इट एंड आई गॉट रियली कंफ्यूज्ड, आई गॉट रियली मेस्ड अप. एंड देन शी वाज लाइक, व्हाट डिड यू डू इन द सेफ्टी डेमो? डोंट यू रियलाइज दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्लाइट, पैसेंजर शुड नो दिस दैट. एकदम येल करने लग गई मुझ पे. एंड आई वाज लाइक यस, बट आई टोल्ड द क्रू हु वाज स्टैंडिंग बिहाइंड मी टू प्लीज कवर इट फॉर मी बिकॉज मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी सीट बेल्ट एरिया, बिकॉज द अनाउंसमेंट इज रियली फास्ट. आप सेफ्टी इंस्ट्रक्शन कार्ड लगाओ, सीट बेल्ट उठाओ, एंड यू कांट गो here and there because 1 second का difference होता है. अगर आप मिस करते हो तो मतलब आप announcement चली जाएगी सीट बेल्ट की. It is that fast you have to do the safety demo. And it was my first day, first flight doing in front of the passengers. Got really nervous and she got really pissed off at me. And then she yelled in front, literally in the front of the passenger. She yelled at me कि तुमने ऐसा क्यों किया and all that. And then I was like ठीक है, I'm somewhere at the fault and जो भी है. Now second sector also she tells me कि you do the safety demo. So I told her that I am not really feeling that confidence in me to do the safety demo in the second sector. Do you mind if I watch in the second or third sector and then I'll do the safety demo? She's like, you don't look confident enough. You just came from such a huge training of 3 months and why are you so underconfident right now? When I come, it's my first flight, that's why I'm a little underconfident and this is my fam flight. And this flight is supposed to mean that I have to notice the fellow crew members, how they're working, and this flight is not my, as we say that I am not the main operating crew, so I am supposed to notice people, right? But she was a bit adamant on the thing that you will only do it. So second sector, somehow I did it. Third also, fourth also. And then in the last of the flight, she comes and says to me that तुम इतनी underconfident क्यों लग रही हो? And meanwhile, I've also forgotten that I did not eat anything for 10 hours. मुझे उन्होंने खाने के लिए भी कुछ भी नहीं बोला. मतलब I was waiting कि जब सब crew खाएंगे, everybody was going to eat and everything. Then I'll also go, but she never asked me. And I was in the forward, so of course I wanted my lead's permission कि आप मुझे बता दो कि मुझे क्या करना चाहिए. Everything I was doing was on their directions. So मेरा थोड़ा सा ना ऐसा, मतलब उस वक्त मैं ये भी भूल चुकी थी कि मुझे periods आ गए थे सुबह. I was in so much of pain, but I had Meftal, तो थोड़ा सा cover up हो गया था. तो she comes into me, she started blabbering, तो बहुत underconfident लग रही हो, you're not working nicely and you're not taking the initiative to do the work and all that. So मैंने कहा the only thing I did not take initiative was in safety demo because I think I was not really fast with the pace of the announcement. So I just asked you कि मुझे second sector के बाद third sector से दे दो. I just requested you that and I don't think so this was too much to ask. And that time also like I was 19 years old and I did not know कि flying का ऐसा culture होता है कि you have to act in front of the senior that you care about what they're saying and you have to act in that relationship कि हाँ ये मेरे senior है तो तुम उनके हाँ में हाँ मिलाओ. ये सब मुझे नहीं पता था that you have to do all kind of these things. ठीक है, तो मेरे लिए इतना था कि मैं अपना point रख रही हूँ. मुझे ऐसा लगा था मैं जितनी बार अपना point रख रही हूँ वो उतनी बार offend हो रही है. And she was like let me take you straight to the base office, I mean the main my airline's office, and we are going to call all the seniors over there. I'm going to tell you that you're not fit for the flight. I was like, okay man, if you don't feel like I'm fit for the flight then I might be given more fan flights and I'll be. इतना वो नहीं है, but she was creating a huge issue out of it and I just felt like it was not needed. इतना सारा चीजें she could have given me good amount of feedbacks, I would have worked on it, but ठीक है. Now उसके बाद मेरे को भी थोड़ा सा वो हो गया, गुस्सा आ गया कि अभी थोड़ा ज्यादा करी है. The fellow crew members who were with me, they were also telling that she is one of those annoying seniors that nobody wants to fly with and just cope up for this flight and it's gonna be fine after that. Now I mean like I think so only one sector was left, but the energy had gotten between, like there was no crew communication coordination and the things I was taught in my training to maintain a good teamwork no matter what, you should give feedbacks in a proper way. People told so many professional things that no
no matter what, you can't be rude to your fellow crew members, you can't be this, you can't be that. And I just felt like those things which were taught in my training is very different from the flight thing. And then इतनी डांट पड़ रही थी, इतनी सारी चीजें हो रही थी, फ्लाइट भी फट होती है, you have to work endlessly on your toes. I did not even sit except for takeoff and landing for a minute. I felt like I did not even breathe for that time क्योंकि इतना सारा काम था. And first day, पहली job मेरी, it was too much for me to take. And then मेरा ऐसा breakdown हो गया. So I went back in the aft area where no passenger can see you, and I just started crying. मेरे से रुका नहीं जा रहा है, आंसू निकल रहे हैं. And then I don't know, somewhere from the crew behind, they went and told her that she's crying and all that. And she comes behind and tell me, what is my age? मैंने बोला, no, why will I know your age? She's like, I'm 35 years old. I might be the age of your mother, and I'm supposed to tell you things, and it's your first flight. You might think that I'm rude, but I was working in Kingfisher Airlines. Things were really different over there. Like, you think that this is too much? We were literally, हमारे साथ ragging होती थी, हमारे साथ इतना बुरा किया जाता, हम तो पूरी फ्लाइट रो के भी काम कर लेते थे. हमारे टाइम पे ऐसा होता था, वो हमारे टाइम पे वैसा होता था. बट मेरी फर्स्ट फ्लाइट है, मैं दिमाग में कुछ और चीजें लेके आई हूँ, और वो ये चीजें रही है. हो सकता है कि मेरी गलती हो सकता है कि जो मेरे से पहले क्रू आए, who would have been like 100% too good in their work, and maybe I was not. But I don't know, somewhere I felt that the way she behaved was too rude. It was not needed at that point of time. But then I was like, see, I understand that whatever you're trying to tell me is to make me better for my future flights, but there's a way to tell. You cannot shout at me in the front of the passengers. I told her everything because I was in that crying phase. I was like, let's go to the manager, talk everything, what you did, what I did, let's sort it out over there, because there's no point of us talking, because she doesn't want to listen a thing. So I told her कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमको मैनेजर के सामने ही जाके हमारे बात करनी चाहिए, मैनेजर के सामने जाके बात कर लेंगे. She's like, अच्छा इतना रो रही हो, तुम क्या बोलोगी मैनेजर को जाके कि जो तुम्हारी सुपीरियर है उसने तुमको फ्लाइट पे रुलाया? मैंने कहा, I will tell her whatever the hell happened, whatever I did, whatever you told me, I'm gonna tell them that. Why I'm gonna sugarcoat or do anything like that? If I am at fault, and maybe I would have perceived, because मैं उस वक्त उस जोन में आ गई थी कि मैंने जॉब को बहुत डिफरेंट परसीव किया और मुझे बहुत डिफरेंट तरीके से किया. मतलब I was very negatively in that time. मतलब I don't know, like I was feeling very, very demotivated on the very first day that maybe this is not the right job, maybe this is not the job for me, and बहुत ज़्यादा demotivated वाले phase में चली गई थी. And then we land. The funny thing which happens is, so there is us cabin crew, then there is lead, then there is check leads. So the highest, most superior person is check lead. So we go to the base, my Chennai base, we land and everything is fine. So we sit for the debriefing table. हर flight के बाद आपकी debriefing होती है. Debriefing तो हम वहाँ पे 10 मिनट की debriefing दे रहे. So this check lead, senior check lead, walks into the office and she is randomly checking everybody's bags. Bags check इसलिए होते हैं so that you should be carrying your uniform, your makeup items properly, extra हर चीज आपको carry होना चाहिए. So she randomly comes inside and she's checking everything. So I was on my first flight, I had everything, मतलब अपनी तरफ से जो चीजें सही हो सकती थी मैं सब कुछ सही करके आई थी. तो I was like, ठीक है, आपको जो check करना है check कर लो. And she comes with me and she says, is it your first flight? I told her that yes, it is my first fam flight. She's like, I don't want to check your bag, it's good, just make sure that you carry these things. ठीक है भाई, मत करो check. Now she comes to my lead and she's like, please open your bag as well. And she opens her bag and she did not have anything in her bag except one purse of hers. And the check lead yells at her that what is this, like how will you teach your juniors that you do not have proper things in your bag and everything. And I'm looking at her, she's looking at her. भाई बेइज्जती हो गई, तो इसकी मतलब इस टाइप का हो गया था. फिर थोड़े से उनको डांट पड़ा, फिर मैनेजर ने आके उनको डांटा. I was supposed to get the scolding, but उनको डांट पड़ी. And then we all sat and then we finally had our meeting wherein I told my things that I felt that I should be respected also no matter what. And I just felt like the passenger thing, जब आप passenger के सामने मुझ पे चिल्ला रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा. And other feedbacks, I'll really make sure that I do it in my next flight. And then it was nice, like with that lead मैंने कभी वापस fly नहीं किया उनके साथ. But so once I was traveling in her flight, not as a cabin crew, just as a passenger. So I go to her and I just realized that she was the one, but of course you have to respect your seniors, so I say hi to her and everything, and I ask for a glass of water. And then she asked the fellow crew member to give a glass of water to me, and then I had my glass of water and I slept off. And then while the time I was deboarding for the flight, she comes and tells to me, you know what, you can't be asking water from me. I'm like, you are a cabin crew of the flight, whom will I go and ask water for? So she's like, no, but I'm senior, so why did you ask water from me? I just felt that day that she has some issues, and I made my peace with that chalo theek hai,
इसको मैं बिल्कुल भी नहीं पसंद, या हो सकता है इसको कोई भी नहीं पसंद, या हो सकता है इसके पास कोई दिक्कत हो लाइफ में, जो भी हो अपने पास रखे। मैंने कहा माते सॉरी, आई हैव बॉट इट फ्रॉम यू एंड आई एम रियली sorry, but I'm getting late. I'll just deboard the flight. And then guys, yeah, that's it for today's video and I hope you like this series. And there's just one message I want to give to the fellow cabin crew members or the aspirants according to my experience, that do not really think that जो आपको ट्रेनिंग में सिखाया जा रहा है वही सब कुछ प्रैक्टिकल फ्लाइट में होता है. Sometimes you are going to go through the whole training and when you come to the flight you'll feel, oh my god, things are really different, because most of us, me, my friends, my fellow crew members, whoever I have met as a cabin crew, they always had this experience कि भाई बहुत अलग है जब आप चीजें सिर्फ बुक्स में पढ़ते हो, मोटी मोटी बुक्स में, और जब आपको रियली में करना होता है. Yes, aviation has a culture of seniors bullying you sometimes and them wanting you to do whatever they want and then creating that environment where they are trying to scare you when you are doing minimal of mistakes and you see them doing the same mistakes and nothing is happening. It's gonna happen. And if you want me to talk in detail about it, that what are the things that you are going to face as a cabin crew, the problems and all, I'm here to tell you all the stories about it because I personally faced it. I'm sure a lot of other cabin crew also did, but I'm here to tell you how to smartly deal with it because I did 5 years of my life to sustain it. So yeah, that's it for today's videos. I hope you liked it, and if you liked it, please do share and subscribe to my channel. And guys, please don't forget to tell me that आपको next story क्या और जानी है, किस part के बारे में जानी है, because sometimes I feel like मेरे पास इतनी सारा content हो जाता है ना दिमाग में, मुझे समझ नहीं आता next क्या बनाऊं, what is audience really wanting to hear right now. So do let me know and I'll see you in the next video. Bye.